Yes, hello everyone. A very warm welcome in today's session. Jai Hind. Please give me the confirmation if I'm properly audible and visible. Yes, just quickly confirm. Yes, okay, all right. So, yes, I welcome you in this class 6 MCQ biology for NDA CDS 1 2025. Okay. So, before starting the class, let me tell you about the schedule for today. So, today is 17th, right? So, classes starts from 9 a.m., right? So 9 a.m. you have this daily defense updates. 10 a.m. you have daily current affairs. 9:30 complete psych test. This is interview live class. Okay. Then for FCAT you have two classes. One at 3 p.m. for static GK. Other at 1 p.m. for English. Okay. NDA 10 a.m. maths. 11:30 physical geography. 1 p.m. biology. 4:30 English. Okay. CDS, if we talk about the CDS classes, they start from 11:30. So 11:30 physical geography, 1 p.m. biology, 4:30 English, 5:30 maths. Okay. So yes, this is all about the classes for today. Okay, so let's get started with the class. Today we will be discussing MCQs related to two topics. The first is the cytology, okay, cell organelles, their structure and function. And the second is plant physiology, okay, photosynthesis and, respiration, okay. So related to these topics, we'll be discussing the questions. Okay, so please answer the first one. Is the class not visible? Yes. Is the class not visible? Yes. I've already started the class, right? Okay, it's visible. Okay. So which of the following cell organelles is responsible for apoptosis, that is programmed cell death? Lysosome, mitochondria, endoplasmic reticulum, or ribosome? B, A. Okay, different answers I'm getting. Okay, so the correct answer for this is B. Okay, that is mitochondria. Okay, now first let's try and understand what is apoptosis. Okay, this is programmed cell death. It means this is a natural process that the new cells will going to arise by the cell division, and the old or the worn out cells, they are degraded or they die. Okay, so this programmed cell death is apoptosis. Okay, so this is a natural process. So which organelle is responsible for it? The correct answer is mitochondria. Okay. So yes, here you can see that it releases cytochrome C, which activates caspases leading to cell death. See, like this whole thing will not be asked eventually, but you should be knowing which cell organelle is involved here. Okay. Try to answer the next one. The fluid mosaic model of the plasma membrane or cell membrane. Okay. It was proposed by Singer and Nicholson, Watson and Crick, Schleiden and Shawn, or Robert Brown. Yes. So basically, this fluid mosaic model, it was given for, for the structure of the cell membrane. Okay, right. So this model talks about the structure of cell membrane or plasma membrane. So who has given it? Okay, so the correct answer, just a minute, I'm having. Yes, excuse me for that. Okay, so here you can see that Singer and Nicholson, okay, this is the correct answer, not C. Schleiden and Shawn, they have given the cell theory, okay, not this model, fluid mosaic model. So this model describes the plasma membrane. It talks about the structure of plasma membrane or the cell membrane. So it is a bilayer of phospholipids, okay, like, if we talk about phospholipids, there will be two layers of phospholipid, and then there are two types of protein, the intrinsic and the peripheral protein, and you can find it, embedded here and there in this lipid bilayer. So this model perfectly explains
How does the plasma membrane looks like? What is its structure? Okay, right? So please do remember. The correct answer is Singer and Nichols. Schleiden and Schwann ने cell theory दिया था, right? Okay, try to answer the next one. Which type of RNA carries amino acids to ribosomes during protein synthesis? Yes, is it mRNA, rRNA, tRNA, or snRNA? Human body. Okay, what's the doubt? Please write in the chat box. At the end, we can discuss if time permits. Okay. So today we will be discussing the concepts also, and also reflex arc, as one of you have asked about it. Okay, so I'm going to revise these two. Yes, please do ask your doubt. Okay, write it in the chat box and then we can answer it. Okay, at the end, we can discuss it. C. Yes, the correct answer is C, that is tRNA, also known as transfer RNA. So, as the name suggests, it is going to transfer or transport the amino acids to ribosomes during translation in protein synthesis. Okay. So, yes, the correct answer here is tRNA. The organelle responsible for the synthesis of ribosomal RNA or rRNA is, सो आपको यहाँ पे बताना है कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसकी सिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनल करता है? इज इट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी apparatus और माइटोकॉन्ड्रिया? Yes, you can post your doubt so that we can discuss it. So it's very good that you all are coming up with the doubts. It means you are revising and solving the questions. So make this habit, whatever topic we are covering here in the class, you just revise it once on your own and try to practice as many questions as possible. Okay? देखिए इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाता है, दैट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ rRNA synthesis and ribosome assembly in eukaryotic cell. Okay, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस, this is the structure of the nucleus that is present in the eukaryotes, of course, not in the prokaryotes. So the nucleus, if you look at the structure, so this is the nucleolus. Okay, and this nucleolus is responsible for the ribosomal RNA synthesis. Next, try to answer this. Which of the following is not a characteristic of prokaryotic cell? Yeah, okay. At the end, okay, if time permits, you can definitely ask, right? No problem. Yes. Which of the following is not a characteristic of prokaryotic cells? Prokaryotic cell की characteristic इसमें से क्या नहीं है? Okay. क्या नहीं है? Not a characteristic. This is the question. Try to read the question properly, okay? I've already told you, try to read the question twice, okay, before answering. Yes, which of the following is not a characteristic of prokaryotic cells? Yes, can I get more answers? Yes. Not a characteristic. Yes, not a characteristic. D. Absence of membrane-bound organelle is not a characteristic of prokaryotes. Just tell me. This is a very simple, basic question. Okay.
देखिए, आपको दो टाइप की सेल्स पढ़ाई गई है, द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, एंड इट इज टोल्ड क्लियरली दैट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ओके, they do not have membrane bound organelles, but yes, there is cell wall, there will be the circular DNA, but there is no nucleus in which that DNA is found. Okay, rather this DNA is present in a region known as nucleoid. Okay, that contains the DNA, circular DNA in prokaryotes. Okay, तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ओके, endoplasmic reticulum, these will not be there in the prokaryotes. Okay, but yes, they have their genetic material, circular DNA उसमें होता है. Okay, तो जिस रीजन में पूरे बैक्टीरियल सेल में आपको जिस रीजन में ये सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, that region is known as nucleoid, but there is no nucleus. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा. Presence of nucleus is not a characteristic of prokaryotes. Nucleus नहीं होता, because nucleus is also membrane bound organelle. Okay, right? Have you understood the question? Do you want me to explain this again? A very basic question, and you cannot afford to answer this wrong. Yes, कोई भी डाउट है इसमें कैसे ये करेक्ट आंसर है? Haven't we discussed in the class that prokaryotes lack the true nucleus, eukaryotes have the true nucleus? Yes. See, their genetic material is found in the nucleoid region. I hope now this is clear. Any doubt in this one? Do you want me to explain this again? So please be very careful while you are answering the question. Why? Because try to read the question carefully. It is asking not a characteristic. Presence of nucleus is not a characteristic. Okay? Clear? Right? Okay. Now next question, try to read this question twice. Okay, go for each of the options once, just have a look on all, and then get the correct answer. Yes, take your time. Okay, at least give half a minute to it. Okay. Yes, the primary function of smooth endoplasmic reticulum. What is SCR? Yes, okay. Very good. Excellent. So let me see who has answered this correctly. Okay, Anshika Rudrani. Okay. Yes. Very good. Very good. Okay, so I want everyone to answer. Okay, please participate and answer. देखिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कही गई है. सो जस्ट लेट्स रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है. ये आपको क्लियर है, ठीक है? Now this endoplasmic reticulum, it has RER, rough endoplasmic, and the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so जो rough endoplasmic reticulum है, ये रफ इसलिए होता है बिकॉज उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जहां पे राइबोसोम होगा वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसीलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द SCR, द स्मूथ वन, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे कोई राइबोसोम नहीं होता, इसीलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस. ओके, लिपिड मतलब फैट होता है, राइट? सो देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन एंड हार्मोन सिंथेसिस, राइट? So B will be the correct answer. Okay. Yes, try to answer the next one.
Which phase of mitosis is characterized by chromosome alignment at the cell's equator? So yes, is it prophase, metaphase, anaphase, or telophase? यस, कौन सा फेज होता है माइटोसिस में जिसमें क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अलाइन करते हैं? यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इट्स मेटाफेज। ओके, तो इसमें याद रखिएगा ये मेटाफेज प्लेट है और यहाँ पे दिस इज अ मेटाफेज प्लेट और इसी के ऊपर आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स अलाइन है। ओके, यू कैन सी द क्रोमोसोम, दे आर अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट बिफोर बीइंग सेपरेटेड इनटू डॉटर सेल्स। ओके, डॉटर सेल्स में सेपरेट होने के पहले दे अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। ओके, so this is the equator, right? And here they align. Next is the powerhouse of the cell is Golgi complex, ribosome, mitochondria, or lysosome. Yes, power of the cell is, sorry, powerhouse of the cell, a very simple question. Yes, please try to answer. Is the class visible? If it is visible, please try to answer. C. Okay, yes, we all know, right? This is mitochondria, that is the powerhouse of the cell. इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, जनरेट्स एटीपी। एटीपी इज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी इज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी करेंसी? देखिए, इसको हम एनर्जी करेंसी इसलिए कहते हैं बिकॉज सेल के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं दैट इज नीड टू बी कंप्लीटेड। ओके, तो होता क्या है कि सेल यूटिलाइजेस दीज एटीपी एंड गेट इट्स टास्क डन। ओके, सपोज कोई एक टास्क है जिसमें 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट है और 3 एटीपी की रिक्वायरमेंट है, so the cell will going to utilize that 2 ATP or 3 ATP and get its task done in exchange of that. Okay, right? So for this reason it is known as energy currency. Okay, next question. In a eukaryotic cell, where does the Krebs cycle take place? आपको बताना है यूकेरियोटिक सेल में Krebs cycle कहाँ पे होती है? यस, cytoplasm, mitochondrial matrix, ribosomes, or nucleus? Yes. Okay, B, A, two answers I'm getting. Okay, चलिए इसको भी देख लेते हैं। करेक्ट आंसर बी है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, एंड इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग एटीपी एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। देखिए, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो क्रेब्स साइकिल है ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, आई होप नाउ देयर विल बी नो कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट्स द सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस? यस,
कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करता है into and out of the nucleus, Golgi apparatus, nuclear pore, endoplasmic reticulum, or lysosomes. Yes, न्यूक्लियस की यहाँ बात हो रही है, so please be careful while answering. Yes, without any doubt, it should be B only, right? Because it is talking about nucleus. So nucleus has this nuclear pore, okay? Right? Through which the exchange of materials, the transport of molecules, they occur into and out of the nucleus. So this nuclear pore, it control the movement of RNA and proteins between nucleus and cytoplasm, okay? तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस के सरफेस पे आपको ऐसे न्यूक्लियर पोर दिखते हैं थ्रू विच द exchange is happening here. Okay, the transport of molecules is happening into and out of the nucleus. Okay, try to answer the next one. The process of conversion of light energy into chemical energy during photosynthesis occurs in. The process of conversion of light energy into chemical energy during photosynthesis occurs in. जो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में like this is the first step of photosynthesis, okay, the conversion of light energy into the chemical energy. So it occurs in stroma, thylakoid membrane, cytoplasm or peroxisome. Yes. Okay. ओके सो प्लीज डू रिमेम्बर इट अकर्स इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ओके, अब देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ओके, देखिए दो टाइप के रिएक्शन होते हैं. एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में. अगर आप ये याद रख लेंगे कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है. ठीक है, राइट. अब ग्रेना होता क्या है? ग्रेना इज एक्चुअली मेनी थाइलाकॉइड्स टुगेदर. ओके, ये जो एक कॉइन जैसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है, this is the thylakoid. Okay, now the stacks of thylakoid one over the other, it is collectively known as grana. Okay, so like एक की बात करें, अगर एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है तो हम इसको थाइलाकॉइड कहते हैं. बट यही ये स्टैक्स एक के ऊपर एक कलेक्टिवली हम इन्हें ग्रेना कहते हैं. ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, बिकॉज अल्टीमेटली द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इज मेकिंग द ग्रेना. ओके, सो जो पहला जैसे कि हम बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, conversion of light energy into chemical energy, reduction of carbon dioxide, okay, reduction of glucose to that of reduction of carbon dioxide to that of glucose. तो ये जो तीन स्टेप हैं इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, फिर होता है वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग, फिर रिडक्शन का प्रोसेस होता है. ओके, सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, it occurs in the thylakoid membrane of the chloroplast. Now I hope अब कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के कौन से तीन स्टेप हैं, व्हाट इज थाइलाकॉइड, व्हाट इज स्ट्रोमा, व्हाट इज ग्रेना. ओके, इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट टेल मी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन. यस, अभी जितना भी आपको समझाया गया इसमें कोई भी डाउट है सो जस्ट टेल मी टू रिपीट इट. यस, एनी डाउट? बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, okay, repeat it. Okay, let's talk about this again. Okay, so यहाँ पे देखिए, just a minute, excuse me.
Yes, pardon me, I'm having little cold and cough. Okay, so yes, we were talking about the process of photosynthesis. So here you can see कि जो photosynthesis का process है, it is three-step process. The first step is the conversion of light energy into chemical energy. The second step is the splitting of water molecules. The third step is reduction of carbon dioxide to that of glucose. Okay, these are the three steps in photosynthesis. Okay. अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए इसमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन होता है. आपको कई कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं. ओके, लाइक सर्कुलर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर. सो अ सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. ओके, एंड व्हेन देयर इज अ स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड, वन ओवर द अदर, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज ग्राना. इसको हम एक साथ कहते हैं ग्राना. Okay, one is thylakoid. Collectively, they are known as grana, the stacks of thylakoid. Now, whatever part is left other than grana, okay, that is stroma. So here you can see that this is thylakoid. Okay, this is thylakoid. Collectively, these are the grana. ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? ग्राना हो गया. Now, can you see light blue color portion? That is a stroma. Okay, right. So the part other than this, this grana, that is a stroma. So dark reaction occurs in stroma and light reaction occurs in grana, or you can say thylakoid. Okay. Yes, second step of dark reaction is the second step of photosynthesis. Right. Okay. So basically these questions are asked from plant physiology, photosynthesis. Okay, next question, which of the following is a C4 plant? सबसे पहले लाइट रिएक्शन होता है, फिर डार्क रिएक्शन होता है. सो लाइट रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेप, डार्क रिएक्शन इज द सेकंड स्टेप. ओके, C4 प्लांट का आपसे यहाँ पे एग्जांपल पूछा है, तो देखिए मेज इसमें करेक्ट आंसर है. C4 plants like maize have an additional mechanism, Hatch-Slack pathway, to efficiently fix carbon dioxide, reducing photorespiration. Okay. Next question बताइए, which plant hormone is responsible for seed dormancy? Now talking about plant hormones, the questions are not asked generally. If it is asked, it's just one or two in number. Okay. So the weightage is less, but we will going to revise everything. Okay, because we never know, right? No one knows that you might get question from this as well. So which plant hormone is responsible for seed dormancy? Yes, देखिए सीड डॉर्मेंसी होती क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है. जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए सीड डॉर्मेंट हो जाती है, मतलब वो जर्मिनेट नहीं करती. ओके, बट इट इज स्टिल वायबल. ओके, मीन्स अगर उसको फेवरेबल कंडीशन दी जाएगी, सो इट विल गोइंग टू स्टार्ट टू जर्मिनेट. So that is seed dormancy. It is not dead, okay? It is viable, it is live, but yes, in order to protect itself from the unfavorable condition, it just went into this dormant stage. Okay. Yes, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाता है एब्सिसिक एसिड. ओके, so if you talk about the different plant hormones or phytohormones, there are 5 basically that is there in the syllabus. Okay, auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, and ethylene. Okay, out of these, auxin, cytokinin, and gibberellin, these are growth promoters. Okay, they will going to promote the growth. The other two, the abscisic acid and this ethylene, okay, they are termed to be the inhibitors. Okay, तो देखिए एब्सिसिक एसिड सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और प्लांट को जो सीड है उसे डोरमेंट रखता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. Okay, when suppose the climate is not right, okay, the conditions outside is not favorable for the seed to germinate, so in that condition ये जो एब्सिसिक एसिड है ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है. Okay, right. Moving to the next question. The movement of water through a semi-permeable membrane from a region of low solute concentration to high solute concentration is known as diffusion, osmosis, active transport, or transpiration. Very simple question.
So the difficulty level of these questions are little higher, okay? But we are practicing it so that we can easily answer the ones, okay, that is asked in the exam. Gibberellin, okay, gibberellin promotes the seed the plant elongation, ठीक है, प्लांट को लेंथ में इंक्रीज करता है जिब्रेलिन, ओके। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब सेल होता है, काइनिन मतलब डिवीजन होता है, तो ये भी सेल डिवीजन कर रहा है, और जहां पे भी सेल डिवीजन होगा वहां पे ग्रोथ प्रमोट होगी, ठीक है, ग्रोथ होगी, तो इसीलिए जिब्रेलिन को, जो कि लेंथ में प्लांट को इंक्रीज कर रहा है, और साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, एंड ऑक्सिन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द द एलोंगेशन और इंक्रीज इन हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द ग्रोथ प्रमोटर्स, ओके, एंड एब्सिसिक एसिड इज द इनहिबिटर, राइट। यस, इसका आंसर बताइए क्या होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, करेक्ट। यस, सो जहां पे भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेंशन है, इट मींस यू हैव टू मार्क इट एज ऑस्मोसिस विदाउट एनी डाउट, राइट। सो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो फॉर ऑस्मोसिस टू अकर, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, like presence of or having a semi-permeable membrane from a region of low solute concentration to high solute concentration. अब देखिए इसमें आप मतलब समझिए concentration क्या होता है, solute क्या होता है, we have discussed in the concept class also, but let's revise and try to understand this. देखिए यहाँ पे सोल्यूट की बात करें तो जैसे शुगर हो गया, शुगर एक सोल्यूट है, ओके, सॉल्ट एक सल्यूट है, ओके, वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द सल्यूट। शुगर और सॉल्ट हम सल्यूट कंसिडर करते हैं। जब ये सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं, एड अप होते हैं, दे फॉर्म दी सोल्यूशन, जैसे शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए लो सल्यूट कंसेंट्रेशन मतलब जहां पे शुगर कम है, कंसेंट्रेशन मींस इट्स अमाउंट, ठीक है, जहां पे शुगर कम है और जहां पे शुगर ज्यादा है, मूवमेंट कैसा होगा, लो शुगर से हाई शुगर, ठीक है, इफ वी आर कंसिडरिंग शुगर एज सल्यूट। अगर हम सॉल्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन जहां पे कम सॉल्ट है और जहां पे ज्यादा सॉल्ट है, सो लो टू हाई ऑफ सल्यूट कंसेंट्रेशन, ओके, through a semi-permeable membrane, that is osmosis. So it is a passive process that regulates water balance in plant cells. Okay. All right. Next बताइए, stomata open due to accumulation of which ion in the guard cell? Yes. Now is it clear? Now is it clear? Any doubt till here? Please write in the chat box. Okay. Which question you are finding difficult or you want me to explain again? Okay. अगर कोई भी doubt है, yes. Okay, different answers, C, D. It's C, potassium. Okay, so those who have answered C, you all are correct. Okay, so influx matlab the incoming of potassium ion into guard cells causes water absorption leading to stomatal opening. So stomatal opening is regulated by this influx of potassium ion. ठीक है, potassium ion will going to enter inside, okay, the guard cell, and that leads to stomatal opening. Okay. Next बताइए, which pigment is responsible for capturing light energy in plants?
Carotenoids, xanthophyll, chlorophyll or anthocyanin. Yes. Which pigment is responsible for capturing light energy in plants? Yes, I have explained that again. If there is still any doubt, you can just let me know. Capturing light energy in plants. Yes, very good. Okay, chlorophyll. So chlorophyll is responsible for absorbing the light energy for photosynthesis, primarily in the red and blue wavelengths. Okay. Next is, in which plant part does nitrogen fixation occur in leguminous plants? Okay. So कौन सा plant part है जहाँ पे nitrogen fixation होता है in leguminous plants? Is it leaves, roots, stem or flowers? Yes, correct. Very good. It's roots. ठीक है. चलिए अब इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर रिलेटेड. ओके. सो इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये समझिए कि आप सबने पढ़ा है कि एयर में 78% इज द नाइट्रोजन प्रेजेंट. ओके. तो वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ओके, इन द एयर सराउंडिंग अस, वो नाइट्रोजन प्लांट उस फॉर्म में अब्सॉर्ब नहीं कर पाते. ओके. और आपने फर्टिलाइजर्स भी पढ़े हैं कि फर्टिलाइजर्स में एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस. ओके. सो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये फर्टिलाइजर्स में इसलिए होते हैं बिकॉज दे विल गोइंग टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ओके. एंड दैट्स व्हाई फर्टिलाइजर्स आर एडेड. ओके. ठीक है. तो फर्टिलाइजर का रोल क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, और फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है. ठीक है. इसका मतलब नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए. बट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है प्लांट वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते. ओके. सो दीज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसमें एग्जाम्पल है राइजोबियम, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. ये नाइट्रोजन फिक्स करता है. फिक्स कैसे करता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और उस फॉर्म में प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके. सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, उन्हें नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा टू गेट अब्सॉर्ब्ड. ओके. तो ये जो काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का, दिस इज द वर्क ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. एग्जाम्पल इज राइजोबियम. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, जो लेग्यूम्स होते हैं या जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे पी इज अ लेग्यूमिनस प्लांट. ठीक है. बीन, ओके, राइट. सो पी, बीन, दीज आर द लेग्यूमिनस प्लांट्स. ओके. तो इनके रूट नोड्यूल में ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में, जिसमें कि प्लांट ने यूटिलाइज कर सके, जैसे नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. ठीक है. रूट नोड्यूल्स क्या होती है? जैसे रूट है. ओके. सो एट प्लेसेस दीज रूट गेट स्वोलन. ओके. सो जनरली आप सबको पता है कि कुछ ऐसे रूट्स होती हैं. ठीक है. बट जनरली यहाँ लाइक इफ यू टॉक अबाउट द रूट नोड्यूल्स, तो यहाँ पे स्वलन हो जाते हैं रूट्स. ओके. और यही नोड्यूल बनाते हैं. ठीक है. यहीं पे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम दे लिव देयर. okay, and this is how they convert the atmospheric nitrogen, the insoluble one, to the soluble nitrate and nitrate. So this is the whole concept regarding nitrogen fixation.
leguminous plants, okay, and how the conversion occurs, right? So I hope now this is clear. If there is any doubt, you can ask me to explain this again. Okay, next, which enzyme catalyzes the first step in carbon dioxide fixation in the Calvin cycle? Yes. कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है फर्स्ट स्टेप इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द केल्विन साइकिल? इज इट रुबिस्को, पीपी कार्बोक्सिलेज, एटीपी सिंथेज और नाइट्रेट रिडक्टेज? इट्स रुबिस्को, ठीक है। सो रुबिस्को का देखिए फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। सो इट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द Kelvin cycle. Okay. Okay. Next question. The ascent of water. Okay. It means the upward movement of water. Okay. Ascent means going up and descent means going down. Okay. So ascent of water in xylem is explained by root pressure, capillarity, transpiration pull or imbibition. So going up of water is the ascent of water. Going down of the water in the xylem is descent of water. That does not happen. So it's always the ascent, okay? Because yes, the roots, they will going to absorb the water, okay? And they will take the water through xylem to the different parts of the plant. Okay, A, B, C, three different answers. It's transpiration pull, okay? तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि there are so many tall trees, okay? So how does the water reach to that height? Okay, so this is because of the transpiration pull, okay? और transpiration pull में cohesion और adhesion forces होती हैं। देखिए cohesion और adhesion का concept एकदम simple सा है। so एक हम example लेते हैं, आपने physics में भी पढ़ा होगा। जैसे ये ग्लास है, इसमें मर्करी है, ठीक है? तो आपने मिनिस्कस के बारे में पढ़ा होगा कि एक होता है कॉनकेव, एक होता है दिस इज द कॉनकेव एंड दिस इज द कॉन्वेक्स, ठीक है? ये केव जैसा बन रहा है, ओके? यहाँ पे डिप्रेशन है, तो दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ओके? अब देखिए होता क्या है कि ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल हैं और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनके बीच में देयर इज अडहेसिव फोर्स। इसका मतलब कि अगर हम ग्लास और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। अगर ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो अडहेसिव फोर्सेस हैं, ठीक है? राइट, सो दिस इज अडहेसिव, दिस इज कोहेसिव। अब आपको क्लियर होगा कि अगर डिफरेंट है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो अडहेसिव है, और अगर सेम मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो कोहेसिव है, ओके? अब ये जो मर्करी और वाटर का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिनिस्कस है, इसका मतलब कि ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल हैं और ये जो इसके जो मॉलिक्यूल हैं, ओके, वाटर के, तो ये इसकी तरफ जा रहे हैं, ओके? ये इसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब यहाँ अडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स इज मोर, ओके, एंड अडहेसिव फोर्स इज लेस, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इससे रिपेल हो रहा है, दूर जा रहा है, ओके? सो ग्लास और ये मर्करी के बीच में ऐसा कोहेसिव फोर्स, ठीक है, सॉरी अडहेसिव फोर्स है। मर्करी मर्करी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, मर्करी और ग्लास के बीच में कम है। सो कोहेसिव इज मोर देन अडहेसिव, ओके? इसी तरह होता है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल में भी।
So water is pulled through xylem due to cohesion and adhesion forces that is generated by the transpiration. Okay. So cohesion and adhesion, it create tension within xylem that helps move water upward. Right. Next question बताइए. What is the function of phytochrome in plants? Phytochrome का function क्या होता है? Regulation of flowering, water transport, photosynthesis or seed germination. Yes. Function of phytochrome in plants. It's regulation of flowering. Okay. So phytochrome, it is a photoreceptor that is involved in regulating flowering and other light dependent processes. Okay. Okay, now let's revise the two concept, and then one of you were asking the doubt, you can ask. Okay. राइट. ओके, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑर्गेनल और उसके फंक्शन है. साइटोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 100% आने हैं. ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे यू विल गोइंग टू गेट द क्वेश्चन सर्टेनली. सो साइटोलॉजी इज वन सच टॉपिक. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं. न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्जी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, सो देयर फंक्शन अलोंग साइड इज गिवन, यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है, आपको फंक्शन पे ही फोकस करना है. मोस्टली फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं. एंड ट्राई टू प्रैक्टिस डायग्राम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. ठीक है, लेट्स टेक 2-3 मिनट्स एंड लेट्स रिवाइज द फंक्शन. अब देखिए, न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें होता है जेनेटिक मटीरियल. ओके, एंड इट रेगुलेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो. ओके, राइबोसोम की बात करें, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन थोड़ा कनेक्टेड होता है. ओके, कनेक्टेड इन द सेंस दैट अभी हमने पढ़ा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भी होता है और रफ भी होता है. ओके, सो रफ जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और जो स्मूथ है वो लिपिड को करता है, फैट. ठीक है, हाँ, लिपिड और फैट के सिंथेसिस का काम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, बट उसे प्रॉपर्ली पैक करके ट्रांसपोर्ट करने का काम है गोल्जी अपैरेटस का. ओके, सो इट पैकेजेस प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम द सेल. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है टू सिंथेसाइज सेल्यूलर मटेरियल सब डिवाइडेड इनटू SCR एंड RER. ओके, देन न्यूक्लियोलस की बात करें, सो इट इज अ सबस्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस दैट सिंथेसाइजेस राइबोसोमल RNA. ओके, mitochondria is the powerhouse of the cell that performs cellular respiration. This we have discussed. Then vacuoles क्या होते हैं? They are empty bags within the cell, and vacuole they have like उसमें vacuole का जो outermost layer है, okay, the membrane is tonoplast. Okay, the membrane is tonoplast. Now, if we talk about vesicles, so it packages of cell membrane that contain material for transport into or out of the cell. Okay. Cytoskeleton, skeleton matlab kya? It will going to provide the shape and structure. Similarly, cytoskeleton also does the same. Okay. So yes, it provides internal support of the cell. Flagella, cilia and villi, these are the locomotory structures. Okay. So they are protein filaments that allows cells to move, mobility में help करते हैं. Then cell wall, cellulose का बना होता है. ठीक है, and it is protective in nature, provides rigidity to the plant cells and absent in the animal cell. Okay, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, so photosynthesizing organelle है ये. Central vacuole, large water filled sac in the middle of this plant cell. Okay, so 90% space जो plant cell में होती है, that is occupied by this vacuole. And I have told you why is it so, because plants they have to store things. Okay, so they are given a larger vacuole. Lysosome, they contain hydrolytic enzyme. Okay, and they break down the unwanted materials, जो भी worn out cells हैं, dead old cells हैं, that is removed from the cell by this lysosome. Okay, so it is known as suicidal bag.
Centrosome, this contains centrioles and help in reproduction. Okay. So lysosome or centrosome, देखिए, it is present only in animals. And cell wall, chloroplast, central vacuole, present only in plants. Okay. So this was the brief overview of cytology. Right. Moving ahead to this reflex arc, which one of you have asked to explain. Okay. देखिए, रिफ्लेक्स आर्क में एक चीज क्लियर रखिएगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है प्राइमरली. ठीक है. राइट. अब समझिए रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है. सपोज वी हैव टच्ड एनी हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो दैट हीट, ओके, द हीट दैट वी हैव टच्ड, ओके, वो जो हीट है दैट विल गोइंग टू एक्ट एज अ स्टिमुलस. ओके. एंड दैट स्टिमुलस इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन. ओके. तो देखिए यहां से, जैसे यहाँ पे तो कैक्टस टच किया गया है. ओके. सो यस, दिस लाइक द सेंसरी रिसेप्टर्स आर देयर इन द स्किन. ओके. तो जो स्टिमुलस है उसे रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं. स्किन यहाँ पे रिसेप्टर है. ठीक है. नाउ यहाँ पे स्किन ने, रिसेप्टर ने उसे रिसीव किया एंड इट इज टेकन थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन टू दैट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ओके. सो दिस इज द ग्रे मैटर और यहाँ पे आपको व्हाइट मैटर ऐसे दिखता है. ओके. तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड इज टेकन टू द स्पाइनल कॉर्ड, but the memory can be stored in the brain. Just okay. So the memory is stored in the brain. Brain is involved secondarily, not primarily. ठीक है. उसके बाद देखिए मोटर न्यूरॉन के थ्रू वही वापस आता है and it is now the effector organ, the muscles that is going to act and we remove our hand immediately. Okay. ऐसा ही होता है इफ वी टच एनी, लाइक कोई अगर हम कैक्टस टच कर रहे हैं या कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, आप देखते हैं इंस्टेंटली. ओके. दैट हैपन लाइक एट एन इंस्टेंट. ओके. वी जस्ट रिमूव आवर हैंड अवे विदाउट इवन थिंकिंग. ओके. थिंक हमें क्यों नहीं थिंक करना पड़ रहा है, बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व एंड हियर यू डो नॉट हैव टू मेक डिसीजन. ओके. राइट. यहाँ आपको डिसीजन नहीं करना, कोई डिसीजन नहीं लेना है. स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है तो ये जो एक्शन है ये काफी फास्ट, रैपिड और क्विक होता है. ओके. राइट. बिकॉज yes, there is no more, like there is no other option. Okay. If we touch any cactus or any hot object, the first thing or the only thing that is to be done is to remove our hand. Okay. In order to save ourselves. So this is about the reflex arc. ये जो स्टिमुलस है रिसेप्टर रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाया जाता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर या मसल्स में पहुंचाया जाता है. दिस इज हाउ द रिस्पॉन्स इज जेनरेटेड. ठीक है. जैसे दो टर्म होते हैं, एक्शन रिएक्शन, आपने पढ़ा है. ठीक है. सो एक्शन इज द स्टिमुलस. ओके. एंड रिएक्शन इज द रिस्पॉन्स. ठीक है. लाइक इफ यू टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, ये तो एक्शन हुआ. ठीक है. रिमूविंग आवर हैंड इंस्टेंटली, दिस इज द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स टू द एक्शन. ओके. इसको याद रखिएगा, स्टिमुलस एक्शन है और रिस्पॉन्स उसका रिएक्शन है, तो आपको और क्लियर रहेगा. ठीक है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द reflex arc. Okay. Yes, what was your doubt about in the human body? Please do ask. We have a few minutes left. You can unmute and ask. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, while I was going through MCQs, there was this question: which structure increases the surface area for absorption in small intestine? So in the options, villi was given and microvilli was also given, but both are present in small intestine. So what will be the correct option? Okay. So yes, the correct answer will be microvilli. Okay. राइट. देखिए इसको समझते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होता है. ओके. बट फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन, माइक्रोविलाई दे आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक टू दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. तो माइक्रोविलाई सबसे स्मॉल होते हैं, जैसा कि इनका नाम है, माइक्रो मीन्स स्मॉल. ओके. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन. राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी माइक्रोविलाई if both of them are given. Suppose if villi is only given, no microvilli, so we're going to answer villi. But if both of them are given, we'll go for microvilli. Okay.
Right, ma'am. And ma'am, one more question. Yes, yes. Hormones like in questions, hormones like aldosterone, antidiuretic hormone, renin, and cortisol were mentioned. So, if you can clarify the location where they are found, because questions were there on the gland they're manufactured and their specific function. Okay, all right. So, what Okay. were the what are the hormones? Can you just name them again? Aldosterone, Yes, antidiuretic aldosterone. hormone, renin, Yes. and cortisol. There was one more hormone, Yes. acetylcholine hormone. Okay. Okay. Right. Thank you so Okay. much. All right. So the other one is, can you just please repeat? Ma'am, I will type here. Yes, yes, yes. It will be good. Okay. So yes, tomorrow we can discuss. Okay, these hormones and their respective function. I'm going to provide that the diagram as well. Okay, if I can see. सो देखिए यहाँ पे एल्डोस्ट्रॉन तो हमने पढ़ा हुआ है ओके पोटेशियम एंड सोडियम के लेवल्स को ये रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है ओके राइट बट वी विल गोइंग टू डिस्कस क्योंकि एक रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे होता है रेनिन किडनी से रिलीज होता है ओके राइट एंड यस एसिटाइल कोलिन ओके एंड व्हाट एल्स लाइक देयर वर 5 राइट one more. Okay, ADH, right? ADH, you were saying ADH, antidiuretic hormone. देखिए antidiuretic hormone भी आपको बताया गया है. Let me just remind this again. Like देखिए यहाँ पे diuresis को ये prevent करता है diuresis. सो दिस इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसका मतलब ये डायूरेसिस या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को प्रिवेंट करता है कैसे बाय अब्सॉर्बिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ओके अब आप खुद सोचिए कि यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम है एडीएच का ओके यूरिन अगर कंसंट्रेटेड नहीं होगी वो डाइल्यूटेड होगी तो अ लॉट ऑफ वाटर विल बी like it will be wasted right okay so in order to absorb maximum water this ADH will going to come into play okay it will going to prevent frequent urination because अगर dilute urine होती है okay तो उसमें maximum amount of water भी loss होता है और urination भी frequent होता है okay but frequent urination को prevent करता है ये ADH okay and then it also responsible for मेकिंग द यूरिन कंसंट्रेट ठीक है बेसिकली देखिए एडीएच पे क्वेश्चंस तो आते ही हैं बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द अदर 4 आल्सो ठीक है टुमारो वी कैन डिस्कस इट राइट एडीएच रेनिन कॉर्टिसोल एल्डोस्ट्रॉन ओके so ADH we have discussed it okay renin cortisol and aldosterone their location and function okay you were asking so we will going to discuss this tomorrow okay any more doubts anyone yes any more doubts Yes, please keep practicing and revising. Okay. The questions from your end. Okay, so if there is no more doubt, let's end the class here. Thank you so much, everyone, for joining in. Jai Hind.